get a good feeling. Hey guys, you watching trueAKspeaks. मैं हूँ आयुष and this is the video for how you are going to install the Fortnite for Android. अब मैंने भी rumors कई बार सुने हैं that the Fortnite is available on Play Store. The Fortnite is pulled from Play Store due to the intention of Epic Games of not paying that 30% or whatever the revenue that is for the apps to be available on Play Store for download. अब वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा है कि that Fortnite for Android is available on Google Play Store. तो I am just going to do it from the browser. Recently I have made the video how you are going to flash the TWRP without fastboot commands, way to flash the images to the recovery partition via the other recoveries like Orange Fox. So for the same just search for Fortnite and ये जो पहला सर्च रिजल्ट होगा that is for Fortnite free to play cross platform and यहाँ पर प्ले इंस्टेंटली पर आप क्लिक कर देंगे. जस्ट टैप ऑन डाउनलोड और फिर जस्ट डाउनलोड ऐप फ्रॉम एपिक गेम्स. ओके, जस्ट डाउनलोड दिस फाइल. और जिनको नहीं पता कि उनके डिवाइस में अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स इनेबल है कि नहीं, तो वो अपने ब्राउज़र से अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स इनेबल कर लें. Like it is asking me allow from this source, just tap on install, minimize the same and here is the Epic Games launcher. अब यहाँ पर आपको Fortnite पर get पर टैप कर देना है, then on install and it is going to download the same. Remember, it is a very heavy game. It is highly unoptimized game when it comes to Androids. तो जस्ट गो टू सेटिंग्स, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स. आपको एपिक गेम्स को भी परमिशन देनी पड़ेगी दैट इट विल अलाउ द डाउनलोडेड Fortnite APK. तो जस्ट टैप ऑन ओपन एंड आगे क्या करना है लेट मी जस्ट टेल यू. Okay, it is saying updating and it is going to download this hefty size of 5.91 GB. ये ऑलमोस्ट 6 GB का गेम है. तो यू कैन इमेजिन हाउ डिमांडिंग, हाउ मच रिसोर्स डिमांडिंग दिस थिंग माइट बी. तो लेट इट जस्ट डू इट्स थिंग. ओके, यू कैन सी दैट द गेम इज अबाउट टू गेट डाउनलोडेड and now it is checking for the updates and here it is asking me to use your Epic Games account. अगर आपका अकाउंट है just tap on yes, find my account. मेरा तो है तो I will tap on yes और ये ब्राउज़र में आपसे साइन इन करने को बोलेगा. So let me just quickly finish everything and the options which are available here, you can see that you can use your Epic Games account. आप Facebook से भी साइन इन कर सकते हैं. यू कैन यूज़ योर गूगल अकाउंट, Xbox लाइव, प्ले स्टेशन नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, Nintendo अकाउंट, Steam, साइन इन विथ Apple. तो लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश सेटिंग अप माई अकाउंट. ओके, आफ्टर यू लॉग इन टू योर अकाउंट इन द ब्राउज़र, इफ़ यू आर यूजिंग सम अदर ब्राउज़र तो वो आपको ऑटोमेटिकली Fortnite ऐप पर रीडायरेक्ट कर देगा. एंड I was using Via, so it was giving me the prompt whether to open the Fortnite application. I just tapped on OK. आपको Via browser use करना है तो link will be in the description. It is a very good and most lightweight browser out there. This is the way how you do it. You can see that it is just about to get connected and इसके बाद the gameplays on Fortnite for Android. A video will come if you guys are going to request for the same and for how much FPS that I am going to get with this ROM and kernel combination, that is Evolution X plus Kangaroo X. I am on Poco X3 Pro
you can see over here. And इट इज़ अ वेरी गुड गेम. अब मुझे पीसी में तो बहुत पसंद है, मैं पीसी में बहुत खेलता हूँ. एंड विथ एंड्रॉयड आई नो इट इज़ रियली अ लॉट ऑफ अनऑप्टिमाइज थिंग. तो कंट्रोल्स में या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे. बट जिस तरह की ये चीज़ है ना, it actually worth suffering through all these problems. Okay, and this was all how you do it. This is the home screen of the game. Okay, let me just go back. Okay, it is not going back, so let me just minimize the same and kill it from the recent application. And if you like my stuff, please like and share my videos. That's all for this video. Subscribe to my channel as well. You have been watching trueAKspeaks. मैं हूँ आयुष. Thank you. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and